Welcome to today's publication. So today we are having Mehak Khan ma'am with us. Firstly, I would like to congratulate you ma'am for having your book published with us. And अब आपकी book Amazon और हर ऐप पे live है. So how are you feeling ma'am? Thank you for having me here. I'm really thrilled. I'm over the moon. And there's a sense of excitement, nervousness, and also a relief. And I'm really happy. Amazing. Ma'am, your book's name is Poetry of Secrets. So what kind of secrets you're gonna, present in front of our audience with your poetries? Simply, when I was deciding the name for my book, I was feeling a little bit perplexed about that because that was like a challenge for me to decide the name of the book. But then I thought that the Poetry of Secrets, it's a perfect, suitable name for that book because there are secrets about my struggles, about my pain, and about a loss, about grief, and about despair, and about hope. There are a lot of secrets like Okay. So how did your, journey of writing started? How did you start writing? actually I have been fond of poetry since childhood Okay. when I was a teenager. And like I have a, a lot of love for poetry, and this thing made me to wrote a book. That's amazing. At what age did you start writing? At what age? I think it was like 17. Okay. 17. Yeah. Okay. Like what is writing for you? Does it kind of, is it a way for you to kind of escape all your, worries or something like that? Or what is it basically for you? For me, writing is a comfort and solace. Amazing. Like, yeah, it's a kind of solace for me. When I get disturbed by the world, I found peace in writing. And I found really peace in writing. Like when I thought that nobody would listen me, and there's no besides me, I thought that writing is always with me. If you are just struggling in your life, nowadays everybody is struggling in their own way. So Yeah. I was also struggling in my life, and I don't I don't found anyone besides me at that time. Then I start writing, and it become a support for me at that time. So I am really like obliged this time. Amazing. So ma'am, Yeah. like when I'm talking to you, I could feel that something is there that is kind of worrying you. So can I ask you what is that? Like it's a when you are just putting your work out there, Yes, like there's a sense of worriness because there you are showing your vulnerability also, true. like how your work will be perceived by others because people were knowing you like before पहले तो लोग आपको किसी दूसरे अंदाज से मतलब दूसरे वे से जानते थे बट इसके बाद जब आपको लोग पढ़ेंगे तो लोग आपको दूसरी नजर से फिर देखेंगे लाइक ये ऐसी थी some sort of worriness about this, like how your work will be perceived by your readers. Okay. Okay, but like when I was going through your book, when I read it, it was really interesting. Like only I read the introduction part and it was way too interesting that I kind of, you know, it was a kind of feeling कि हाँ मेरे को read करना ही है. It was so interesting. So, how did you learn to write in such a great manner? Like इतना ज़्यादा engaging हो audience के लिए. How did you make that? My writing style is simply organic. Like when I feel inspired and when my thoughts overflow. Like really, when my thoughts overflow, then I start pouring it down on the paper. Okay. Really, and some sort of I get some sort of like जब ज्यादा होता है ना ऐसे थॉट्स का अंदर से या फीलिंग्स का इमोशंस Yes, का yes, yes. तो उस टाइम फिर मुझे समझ ही नहीं आता मैं कैसे ये लिख लेती हूँ इट्स सॉर्ट ऑफ Okay. यूनिक थिंग Yeah. या What is life for you? या सॉरी What is life for you? for me
It's really a difficult question. It's really a difficult question for me. Life is a mix of struggles and also, happiness and pain and also hope. Amazing. Yeah, you gave But such a beautiful explanation of the life, right? Yeah, it is all about emotions and feelings and everything. for me this time, life is poetry. Okay, that's something amazing. Okay, so for you, life is poetry. Yeah, because through the poetry I found poetry as a perfect medium to convey my emotions and feelings. That's why I think life is poetry. That's amazing. So I would like to ask you one thing. Like, what do you do apart from writing? But I do apart from writing in Yeah. my leisure time or something else. In my Um, leisure time, I mhm. do painting, drawing, and I'm also fond of sketching also. बट राइटिंग मुझे छोड़ती ही नहीं है तो बाकी सबके लिए टाइम ही नहीं मिलता. That's but I also carry on those things also. Okay, so you are quite a very creative person, I guess. It's it's not Yeah, only yeah. writing, you also do painting, which is um for me it's a very difficult task, like to do the I painting believe, or art and craft, anything like that. yeah, I believe that painting is a silent poetry. That's why I do That's some sort amazing. of. Hmm. You like every word that you say has quite a deep meaning, I could say. Okay. So do you believe, like, I read a few of the, your poetries. So, do you believe in life after death? What do you think? Is it something like that? Life after death. Yeah. Yeah, there is life after death. Okay. I believe in that. Yeah, I Can you believe in explain that. a little? Yeah, there is life after death, like in religious context also. I'm saying a religious context, not Okay. in philosophical concept. I'm just saying a Okay. religious context. Yeah, Okay. So what is spirituality for you? spirituality. It's a deep concept, I think, and I'm so little Yes. to discuss it here. I'm so little in front of this thing to. Okay, that's true. Okay. So in your life, have you ever faced a situation where you found, someone as a guiding light for you? Like who whom would you consider as a, kind of a, it could be any teacher, it could be anyone, जिन्होंने आपको किसी भी toughest situation से बाहर निकाला. So, have you ever No, faced something there like that? Yeah, I'll tell you. There were a lot of people with me. Like जर्नी में तो आपके साथ बहुत होते हैं, ठीक है. बट मैटर वो करता है जो डेस्टिनेशन तक आपका साथ दे, है ना. Yes. तो जर्नी में तो आपको लोग मिलते रहते हैं. इट्स लाइक ये तो होता है. एंड डेस्टिनेशन में मुझे नहीं लगा कोई मेरे साथ रहा, बट स्टिल आई एम आई एम ग्रेटफुल to them, all of the people who were with me and who ghosted me at the time when I need them. Okay, I'm still grateful to them because अगर वो उस टाइम मुझे ना छोड़ते तो शायद मैं बुक लिख ही नहीं पाती. बिकॉज मुझे कभी जरूरत थी किसी को कुछ कहने की, बट देयर वाज नो वन, सो आई स्टार्ट राइटिंग. अगर वो उस टाइम ना छोड़ते तो शायद मैं लिख ही नहीं पाती. And this thing made me independent. When people leave me, this thing made me independent. I'm still grateful to them. And it was all like, ये खुद मैंने सब लिखा है and just arranged everything. I didn't get any help from anyone. But still I'm grateful to everyone who was with me in the journey, but they were not with me at my destination. Still I'm grateful. Amazing. So what are your future plans? Like what have you thought for you कि और अभी कौन कौन सा काम हम देखेंगे महक का? अभी तो और भी बुक्स आएगी. लाइक Okay, अभी बहुत सी बुक्स आएगी बट टाइम लगेगा थोड़ा सा. तो आएगी, बुक्स आएगी फ्यूचर में. that's amazing. We are eagerly waiting for your books to come. So थैंक ma'am, यू. okay. Like if I could say that your book's name is Poetry of Secrets.
So, you have already defined what life is for you, but can you define me what poetry basically, like poetry का एक अपना स्टाइल होता है, लिखने का, और जो आजकल के ऑडियंस हैं हमारी या जो भी राइटर्स होते हैं, they kind of struggle when it comes to writing properly in a poetry format. So how did you do that? और आप हमारे budding writers को कैसे बताना चाहोगे कि किस तरीके से वो अपनी स्किल्स को एनहेंस कर सकते I believe that the death of childhood is the beginning of poetry. In my opinion, like uh, मतलब चाइल्डहुड तो हर किसी का लाइक खत्म होता है, लेकिन जब चाइल्डहुड मर जाता है, खत्म होना और मर जाने में फर्क है। तो इट्स लाइक जब आप सच्ची में कुछ फील करते हैं ना, तो ही आप लिख पाते हैं। लाइक पहले आप खुद वो फील करें, फिर आपके रीडर्स वो फील करेंगे। जब आपने खुद फील नहीं किया होगा, उस एक्सपीरियंस से आप गुजरे ना हो, तो कहाँ आपके रीडर्स मतलब फील कर सकेंगे। एंड फॉर द बडिंग राइटर्स आई वांट टू से दैट ड्राफ्ट जो पहला ड्राफ्ट होता है वो किसी का परफेक्ट नहीं होता है। सो जस्ट डोंट फियर, डोंट पैनिक। just if you're passionate about writing, just write. Don't think about people's opinions. Don't let the opinions of others crush you. Let it fuel you. People will say that ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, but you have to do it for yourself. जो भी नो नो करते थे उसको आपको yes में टर्न करना है, and that's simple. हैं? Don't fear and don't panic. Yeah. Amazing. So, ma'am, what do you think should be the quality in everyone? Like, if they want to survive in today's world, so what do you think should be, one quality that should be present in everyone? या फिर they should work on it. It should be like it's difficult for me. I think it should be one should be understanding, like not understanding, some sort of loyal. What That call it do you say? loyal, Okay. like loyal. Yeah, loyalty, because that's something rare nowadays. We don't side anywhere. That's what I crave for also. Okay. So, what are the three biggest life lessons that you have got from your life? Or obviously, you have a big life ahead, but still till now whatever you have experienced, out of that, what are the three biggest learnings that you would like to share with our audience? Life lessons. Yeah. Like there are a lot of life lessons. Like life तो हमें सिखाती ही रहती है कुछ ना कुछ रोज रोज। Yes. एक तो पहली चीज जो मुझे लाइफ ने सिखाई है, दैट्स just be independent wherever you are. Just be independent, don't be dependent on others. Like आपको आज मतलब सब कुछ आपके पास ही होता है, तो आपको किसी और की जरूरत नहीं होती है कुछ समय, बट इट्स नॉट दैट। लेकिन फिर जब इंसान को जब इंसान हार जाता है हर किसी से, तो फिर वो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करता है। तो जस्ट बी इंडिपेंडेंट नाउअडेज, एवरीबडी नीड्स टू बी इंडिपेंडेंट। लाइक डोंट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स। दिस व्हाट आई लर्न फ्रॉम लाइफ। एंड अदर थिंग दैट आई लर्न इज दैट कोई इंसान आपके साथ क्या करे क्या ना करे, जस्ट बी गुड, रियली गुड टू अदर्स, जस्ट बी नाइस टू अदर्स, you know just be nice to others, and don't be jealous about others. And there's these things that I learned from the life, and Amazing. there's a lot to learn. True. Yes, life keeps on teaching us, so yes, there would be a lot of teachings. So, ma'am, what is your strength? Like, what was that one thing which made you, survive in all of your toughest situations and shine like the brightest star as you are doing right now? My sorry, Your strength. could you repeat? My strength, my strength. It's me. That's amazing. Yeah, it's I can't give my credit to others. It's always me. It's always me. And there are also parents who are also there for me, like a true guide for me. And जब आपको there was a time in my life कि जब आप पे लोग भरोसा ही नहीं करते हैं कि मतलब ये कुछ करेगा या कुछ ऐसा ही होता है ना, तो Mhm. फिर उस टाइम जो आप पे भरोसा करता है, दैट मीन्स दे आर योर, दीज पीपल आर योर स्ट्रेंथ। ओके,
So I don't find in these things in my friends or like some sort of in my parents. But फिर लास्ट में जब आप कमरे में आते हैं दिन में थके हुए वो एक कमरे में बैठते हैं फिर आप सोचते हैं कि कौन मेरे साथ था तो ऐसा लगता है कि कोई था ही नहीं इट्स यू एंड इट्स ओनली यू मी माई सेल्फ एंड आई Amazing. Amazing. I'm just loving all your replies way too. I mean, they're just fantastic. Okay, ma'am. So what's there inside your book? What is our audience going to get when they will be reading your book? My book consists of wide range of themes like love, loss, grief, despair, hope, a lot of introspective poems also. Do you know, there's a poem in my book that's there's a hidden room secrets. Okay, and in that point there's a story like there's a room in my room that's hidden, and in that room I have put my scars. Okay, and those scars eventually I just go in that room and those scars start speaking to me like why you have just why you are hiding us from the world, we are a part of yourself, just show us to the world. These kind of poems, there are a lot of like melancholy poems and some sort of introspective and self discovery poems. Yeah. Amazing. So, ma'am, one of your poetry's title is basically kind of it was related to the how can you awaken your, soul or something like that. So, can you speak about it? Like, what is basically discussed inside that? How can we awaken ourselves? And yeah, we can also, is that introspective poem like Yeah, what's yeah. the title of the Yes, yes. title of the poem? Could you please tell me? Yes, it was the title basically. Okay. How can we awake the soul? It was simply, I think it was spirituality. I think uh, it was simply I was speaking to my Lord in that poem. Like I am just I'm just like मैं like since से बरी हूँ and these things उसमें थे कि आप मुझे like इनसे बाहर निकालो. I really need you. There's no one besides me. It's only you. That's how I speak. That was a simple thing that I was telling to Lord. So, why do we feel that we are full of sins? Why is it a feeling like this? Because like अगर इंसान कितना ही परफेक्ट क्यों ना हो फिर भी उसे लगता है कि देयर बिकॉज इंसान है ही इम्परफेक्ट है ना देयर आर इम्परफेक्शंस इन एवरीवन सो अगर हम ये समझने लगे दैट हम सिंस कर ही नहीं रहे हैं वी आर परफेक्ट देन फिर हम कैसे खुद को मतलब परफेक्ट करेंगे अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हम विदाउट परफेक्ट ये इम्परफेक्शंस है हम कैसे तो ऐसा अगर हम दिमाग में रखेंगे दैट वी आर नॉट परफेक्ट तो हम खुद को और परफेक्ट बनाएंगे बिल्कुल. दैट्स व्हाट आई बिलीव Okay. So what can be done to make yourself, better? Not perfect because perfect is like again एक imaginary चीज हो गई. तो खुद को better कैसे बनाया जा सकता है? just when you being nice to the people who have done wrong to you mostly who have done wrong to you just be nice, being nice to them and also just respecting others respecting other people's opinions also like हर किसी के अपने अपने ओपिनियन होते हैं Yes, तो true. उनको एंड छोटा हो या बड़ा हो लाइक आपसे तो उनकी रिस्पेक्ट करना बट आई बिलीव रिस्पेक्ट इज utmost फॉर मी utmost a thing because जहाँ रिस्पेक्ट ना हो वहाँ कुछ नहीं होता है so these things I like. Amazing. Okay. So like you said, respect is indeed the most essential thing. So, like when it comes to, talking about respect. So, what is basically the way of showing respect to the people around you? Like हम किस तरीके से शो कर सकते हैं कि हाँ हम सच में रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि कभी कभार बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है कि वी डोंट रियली वांट टू बट कहीं ना कहीं हम हर्ट कर देते हैं तो लोगों को तो हाउ कैन वी वर्क ऑन इट कि ऐसा ना हो. लाइक हम तो इंटेंशनली हम किसी को हर्ट नहीं करते हैं बट अनइंटेंशनली हमसे हो जाता है हर्ट जी. कोई ना कोई हमसे हर्ट हो जाता है
तो अब मतलब एक तो हम रेस्पेक्ट कैसे करें दूसरों की, लाइक उनकी पहली तो मैंने पहली बात फिर से मैं वही कहूंगी कि उनके ओपिनियंस की रेस्पेक्ट करना। Yes. जब वो आपसे बात कर रहे हो, वो बात मतलब आज क्या होता है ना, कोई हमसे बात कर रहा होता है दैट हम सुन ही नहीं रहे होते हैं, वी आर जस्ट सर्फिंग थ्रू द इंटरनेट एंड लाइक दैट, वी आर नॉट लिसनिंग। तो रिस्पेक्ट वो होता है कि जब आप उनकी बातें फोन आप साइड में रख के उनकी बातें आराम से सुने, फिर सुन के यू आर नॉट इंटरप्टिंग देम, फिर आप उनको मतलब रिप्लाई करेंगे, उनसे आराम से बातें करेंगे। जस्ट एक तो होता है कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन में बहुत फर्क है। Hmm. तो True. वही तो वही बात है इधर। तो दैट्स व्हाट वी ट्रूली लैक नाउअडेज, तो कोई सुनने वाला ही नहीं मिलता है। दैट्स बिल्कुल। व्हाट वी ट्रूली लैक। तो मतलब वो अगर हम अपने आप में बढ़ाएंगे वो चीज, तो आई थिंक दूसरों को लगेगा ये रेस्पेक्ट करता है मेरी, जब आप दूसरों की सुनेंगे, दैट्स द थिंग। मैम, जैसे हमने अभी बात करी तो आपने एक पॉइंट वहां पे बोला कि हम फोन में, या फिर मोस्टली ऐसा हो रहा है कि सोशल मीडिया एक तरीके से अफेक्ट कर रहा है कि हाँ, हम आसपास भले लोग हैं लेकिन फिर भी हम अपना स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारे जो रियल कनेक्शंस है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होते हैं। तो आपका इस पे क्या मानना है कि मतलब सोशल मीडिया एक तरह से ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज भी है कि हम अपने व्यूज को सामने रख पा रहे हैं, बट इन अ वे इट इज ऑल्सो नेगेटिवली इम्पैक्टिंग अस। सो व्हाट वुड यू से अबाउट? आई जस्ट वांट टू से दैट अगर सोशल मीडिया के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है और एडवांटेजेस भी है। लाइक अगर सोशल मीडिया ना होता तो शायद मैं आपसे अभी बात ही नहीं बिल्कुल। कर पा रही होती। यस। एंड इसी वजह से तो मैं मतलब KWP से लाइक उनके साथ कनेक्ट हुई एंड मैंने बुक पब्लिश की। दैट्स इट्स अ बेनिफिट। तो अब हमें देखना है कि हम ज्यादा किसकी तरफ जा रहे हैं, एडवांटेजेस की तरफ जा रहे हैं कि डिसएडवांटेजेस की तरफ जा रहे हैं। तो उसका हमें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। एंड द थिंग इज दैट, तो लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम ज्यादा डिसएडवांटेजेस की तरफ जा रहे हैं। तो ये चीज है जो हमें ज्यादा आज पाई जाती है। वी आर जस्ट ओनली गोइंग विद द डिसएडवांटेजेस एंड नॉट विद एडवांटेजेस। ओके। Otherwise it's a great tool. uh, it's a really great tool, सो like to spread your thoughts, to spread your emotions. It's really a great tool. यस। सो मैम, डू यू ऑल्सो लाइक रीडिंग बुक्स? या जितना जितना ज्यादा मतलब पढ़ने का शौक था, उससे ज्यादा लिखने का शौक फिर हुआ। पढ़ने से ही मुझे लगा कि मतलब ये कितना अच्छा लिखते हैं, लाइक सम राइटर्स। तो कुछ मतलब सेल्फ हेल्प बुक्स होती है, बहुत सारी स्टोरी बुक्स। तो फिर उनसे लगा कि मैं क्यों नहीं लिख पाती इतना अच्छा, तो उनसे थोड़ी इंस्पायरेशन ली। यस। एंड दैट्स आई लाइक रीडिंग अ लॉट लॉट। तो आपकी अब तक की कौन सी फेवरेट बुक है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई हो? That's I think Don't Be Sad. ओके। Yeah, So in that what's there's there inside this book? Can you just give a little bit of summary about that? yeah, that's my favorite book. Do you know what's in that? There's simply topics like how you can overcome with sadness, how you can overcome with grief, and how you can overcome with anxiety, depression, these things. These things, how you can overcome with criticism. These things, the things that we need in daily life. They are they are all there. That's why I like that book, and that book helped me in my in that stage of my life when I was totally in need of those things. Like that book really helped me to overcome. मैम, इफ वी कुड सी, लाइक आजकल या कोविड टाइम के बाद से ही अगर मैं बोलूं तो हमारे देश में या इवन मोस्टली इन होल ऑफ द वर्ल्ड, इट इज लाइक डिप्रेशन बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। राइट, डिप्रेशन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। सो व्हाट, लाइक, वी अंडरस्टैंड कि हाँ, जो अभी का एनवायरनमेंट है वो कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से काफी चीजें हो रही है, सोशल मीडिया का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बट व्हाट इज द रियल रीजन क्यों हम इतने ज्यादा वल्नरेबल हो चुके हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी या इस तरह की जो भी यू नो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस वाली चीजें हैं वो हमें बहुत इजीली अपनी पकड़ में ला पा रही है?
क्या बेसिक रीजन है, हम क्यों इतने ज्यादा खुद से कनेक्टेड नहीं, उतनी स्ट्रांग रूट्स क्यों नहीं हो पा रही हमारी? इट इज सिंपली बिकॉज वी हैव हम खुद से दूर होते जा रहे हैं, यस। यू नो। इट्स सिंपली हम खुद से दूर जा रहे हैं, और हम हम ज्यादा लोगों के ओपिनियंस पे ध्यान देते हैं. We don't believe on ourselves like what we are. We are just only listening to others, only listening to others. और हम शायद खुद को शायद भूल ही गए हैं इस जिंदगी में. इस लाइफ में हम इस दौड़ भाग में हम खुद को भूल जाते हैं. थोड़ा टाइम, दैट्स व्हाट आई डू, आई वांट टू शेयर इट विथ यू. लाइक दिन भर की दौड़ भाग जो होती है, तो फिर हम ज्यादा टाइम अपने साथ स्पेंड ही नहीं कर पाते हैं. ट्रू। यस। तो जितना टाइम आप दूसरों को देते हैं, उतना टाइम आप अपने आप को दो. लाइक व्हाट आई हैव डन, व्हाट आई नीड एंड व्हाट आई डोंट नीड. ओके. तो दिन में मैंने क्या किया, लाइक मैं खुद से, लाइक आई आई वांट टू से, मैं खुद से बातें करती हूँ. लाइक व्हाट आई हैव डन, व्हाट आई डोंट हैव डन, और मुझे क्या करना चाहिए, किस टाइम मुझे कैसे बात करनी चाहिए. तो वी आर नॉट जस्ट कनेक्टिंग विद आवरसेल्व्स. एक मतलब खुद से बातें करनी चाहिए. दैट्स रियली अ पावरफुल थिंग, आई थिंक. एंड वो जो दूसरों का सुनना, लाइक खुद पे भरोसा ना करना, that's the thing. These things are making us more prone to depression, anxiety, these things. And just we are only cutting ourselves from the world. Like हम दूर होते हैं, अपने आप को सॉलिट्यूड में रखते हैं. तो ये चीजें हमें डिप्रेशन एंड एनजाइटी में फिर बहुत ही फिर प्रॉब्लम कर देते हैं ये चीजें. जब हम अपने आप को अलग कर देते हैं लोगों से, हम सॉलिट्यूड प्रेफर करते हैं. सॉलिट्यूड इज समटाइम्स गुड, समटाइम्स, बट नॉट एवरी टाइम. तो जितना चाहे हम लाइक अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उतना लोगों के साथ भी, और जितना लोगों के साथ भी, उतना अपने साथ भी. तो हम शायद खुद को ज्यादा टाइम दे ही नहीं पा रहे हैं. दैट्स वाई. बिल्कुल। Um, yes, whatever you said, everything is true. The real reason behind any kind of, distress or problem that we have is basically our mind, of course. Like हम connected ही नहीं है खुद से. That's true. So ma'am, now I would like to ask you, how was your do you have any message for our audience? Like कोई message जो मैसेज. आप चाहते हो कि सब तक पहुंचे? या. I just I just want to say, if you are, if you are struggling with something or like that, I want to say you that you are not alone in this pain. Like there are ways to overcome with this. Like you can, if anybody is struggling in their life, I only want to say that just believe in yourself. You can do it. Like people, लोग तो कहते ही रहेंगे ना, लोगों का काम ही है कहना. Just if you are really passionate about something, just do it. Don't listen to others. People are meant to say about you against you, lekin just do it in your own way, and do what makes you happy. Don't listen to others. Do what makes you happy. Great, ma'am. That was very amazing. So, how was your feeling with us, ma'am? Like, how did you felt जब आपने आपकी बुक इशू हुई, या फिर जिस तरीके से पूरा प्रोसीजर आपको, कोई प्रॉब्लम या कुछ भी? How was your experience? The most challenging part for me was to find a right kind of platform where I can publish my book. Then, fortunately, I found Kitab Writing Publication. I found, I think, on Insta. That's where I found Ed. Then I contacted with Divya ma'am, and she assisted me a lot, like a sister. Okay. I have a great experience with you, great experience. Like, she was assisting me. Like, I was just when I need her, I was contacting her. Like, there's a problem, this thing and that thing, and she assisted me a lot. She guided me through all the process. I'm really happy, and Great. I am also to work with you in future also. That's amazing. It's kind of an honor to us. So do you have any suggestions for the Kitab Writing publication so that we can improve our services? Improve your services. Till now, you're just doing the right kind of work. I think you're Okay. doing the right kind of. Thank you You are so much, spreading. ma'am. You are spreading happiness. Thank you so much, ma'am. It was really nice interacting with you. Hope all the audience and everyone would have enjoyed this amazing interview of yours.
So thank you so much for being here. Thank you for having me here.